Why so late? लेट हो गया? सर नेटवर्क इशू हो रहा था. Okay. In the last lecture, students have told you about concept of your formula for force with respect to your permittivity. Okay, and dielectric constant students had given you very clearly. So one can easily get a relation, students, between the ratio of the two forces with respect to your dielectric constant also. If in case, if I tell you what is the ratio of electrostatic force, students, electrostatic force of attraction or repulsion between two charges, students, in vacuum to that of medium. So please pay attention, students. Force between any two charges. Okay, students, in a vacuum with respect to force between the same two charges in a given medium. This actually we consider as the relative permittivity of free space, students. This is permittivity, relative permittivity we consider. And students, relative permittivity, I made it very clear what exactly it is. It's permittivity of a given medium to permittivity of vacuum, epsilon zero. Students, क्या ये clear हुआ सबको? Yes. Please students, अगर तुम इसको तुम नहीं भी लिखोगे, then to also you'll be able to crack it more easily. Force का formula vacuum में लिखो, force का formula medium में लिखो, दोनों का रेशियो ले लो 1/4 by epsilon naught, चार्जेस सारे कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में ये जो आएगा वो लिखोगे तुम. ये जो रेशियो है that is called as relative permittivity students. Okay, so do keep this in mind, students. Okay, so your relative permittivity we consider is equal to epsilon for a medium upon epsilon zero we consider. Likewise, I told you one more thing, students. I also made it very clear, students. Epsilon zero, K for a medium, is also epsilon for a medium. And the answer देखना, students. Dielectric constant for a medium is also a ratio of what? Epsilon for a medium from epsilon zero. यानी देखो ये ratio देखो और ये देखो ये दोनों same है. So can I say dielectric constant for medium is also the relative permittivity of free space? Is this clear? Yes. Okay. Now suppose if in case if I ask you, students, define 1 coulomb. Okay, define 1 coulomb. Then how do you go for the definition of 1 coulomb? Your formula for F is equal to what? 1/4 pi epsilon naught K for a medium, Q1, Q2 upon R square. Anybody can get me the definition for 1 coulomb, students? Then how do you present your answer? Definition of 1 coulomb, students. Shaili, can you answer, Shaili? Definition of 1 coulomb? You were without mic initially. You had just pushed yourself into the lectures. Harshita, can you answer, Harshita? 1 coulomb का definition बोल सकते हो? Yes, sir. बोलो. Sir, 1 second. Tell me fast, Harshita. Sir, it is the SI unit of charge which, in terms of ampere and second.
अच्छा, ये कहाँ से तुमने निकाला आंसर? Sir, because charge का SI unit is coulombs. Okay. Yes, Bhargav, can you tell me? Bhargav, you wanted to answer now? You posted it. Bhargav, can you speak? I can't hear you at all. Bhargav? Okay. Yes, anybody else who can tell me definition of one column, students? Students, how to understand it? Listen carefully. Consider two like point. Yes, who's answering? Siddharth, you want to answer? Siddharth, Paul? Sir, when 1 ampere of current is passed through for a time period of 1 second. My dear, वो वाला नहीं है. ये one column यहाँ से आता है. Definition यहाँ पे है. ध्यान से सुना students. Suppose अगर मैंने two like point charges, students, if I happen to go for two like point charges, please students ध्यान से सुनना. Two like point charges of equal magnitude. यानी Q1 को मैं equal to Q2 लिखूंगा और उसको मैं Q लिखता हूं मैं. और ये दोनों चार्जेस रखे हैं वैक्यूम में. अगर मैं वैक्यूम बोलूं उसका मतलब व्हाट एग्जैक्टली K फॉर वैक्यूम, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 1. दोनों के बीच में डिस्टेंस में 1 मीटर रखना स्टूडेंट्स. इफ आई एम कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 1 मीटर, तो फोर्स जो है उनको रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्जेस है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. तो द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, if it is 9 10 to 10 raised to 9 Newton, then students, each charge is 1 coulomb. Each charge is 1 coulomb. Students, ध्यान से देखना. Now please, I'm trying to put forward this. What did I say? Two like point charges of equal magnitude are placed in a vacuum at a distance of 1 meter apart from each other if they repel each other by a force of 9 into 10 raised to 9 Newton, students. Then the charge on each is said to be 1 coulomb, students. यानी देखो, तुम जब समझते हो तो तुम क्या करो, अभी सॉल्व करो. मैंने क्या बोला था? फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आपने बोला था 10 into 9 into 10 raised to 9. 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? सर ये भी है 9 into 10 raised to 9. K फॉर वैक्यूम क्या होगा? 1 है. डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है? 1 स्क्वायर है. क्या दोनों का चार्ज सेम है? हाँ सर, Q स्क्वायर आएगा, मैग्नीट्यूड सेम है. तो कहने से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ क्योंकि इक्वल टू साइन है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर? सो द वैल्यू ऑफ Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो Q का आंसर क्या होगा? प्लस और माइनस 1 कूलम. यानी इट कैन बी बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज or two negative charge. See, the magnitude is plus or minus 1. That's the definition of 1 coulomb. क्या ये क्लियर हुआ सबको अभी? Students, definition of 1 coulomb. Yes, sir. Arshita, can you speak out the definition now? Arshita, can you speak it out? Sir, can you once repeat because I wasn't able to hear clearly. ये देखो ना, सामने लिखा ना, ये पढ़ो. क्या लिखा मैंने? Two like point charges of equal magnitudes Placed in vacuum at what distance? are equal to 1 meter. तो क्या दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? Sir, repulsion होगा. Repulsion with what force? 9 into 10 raised to 9 newtons. तो each charge is said to be of 1 coulomb. खत्म हो गया. उसमें रिपीट करने की क्या जरूरत है? यही देखो, ये फॉर्मूला में डाल दिया मैंने. अभी बोलो वापस डेफिनेशन. Yes, sir. Two like point charges of equal magnitudes placed in vacuum
at a distance of 1 meter are repelled by force of 9 into 10 raised to 9 newtons. Then the charge on each is said to Then be the of 1 charge coulomb. on each coulomb is 1 coulomb. Charge on each coulomb, the charge on On one electron. the magnitude of charge on each is said to be of 1 coulomb. Okay. Yes, sir. Okay, now please pay attention students, okay? When you try to go for the charges के बारे में बात करें students, तो charges के units भी छोटे होता है. जब भी तुम units देखो तो students भी units भी also it's quite small भी consider. SI unit तो मैंने क्या बोला था coulomb? 1 coulomb is equal to what? 3 into 10 to the power of 9 stat coulomb. ये तो मैंने पहले ही बता दिया था. लेकिन इसके अलावा जब भी तुम problem solve करते हो students, you have different smaller units also. अगर मैं m into small c लिखो, mu c लिखो, if I say P and C if I consider N and C में लिखूंगा तो उसका मतलब क्या हुआ? What is small m and C का मतलब क्या हुआ? Yes, anybody? Small m and C. What exactly that means? 1 millicoulomb. Students, 1 millicoulomb का मतलब क्या हुआ? 10 raised to minus 3 coulomb. ये क्या हुआ? 1 mu C का मतलब क्या हुआ? Micro. Microcoulomb. तो 10 raised to minus 6 coulomb. Students, ये 1 PC का मतलब क्या हुआ? Pico. 10 to minus 9. हाँ, ये 10 raised to minus 12 coulomb. ये क्या है? नैनो कोलम. नैनो कोलम कितना होगा? 10 to minus 9. वेरी गुड. 10 to minus 9 कोलम. यानी ये जो है तुम्हें याद रखना जरूरी है स्टूडेंट्स. अगर ये तुम्हें याद होगा तो प्रॉब्लम्स के हिसाब से सही जाएंगे. Now suppose if I happen to give you a question students, okay, I want you to give me students, ध्यान से सुनना students, okay, you have to find out students the order of magnitude. Listen carefully students. ये एक multiple choice question में भी पूछते हैं students, लेकिन अभी मैं इसका ऑप्शंस नहीं दूंगा जानबूझ के students. So what exactly the question is students? ये ध्यान में रखना. My question is students, I want you to find out students the ratio of gravitational force to electrostatic force. Ratio of gravitational force to electrostatic force between two electrons. Between two electrons we consider at a distance 1 meter apart from each other. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ स्टूडेंट्स. Ratio of gravitational force to electrostatic force between two electrons at a distance of 1 meter apart from each other. But मुझे क्या चाहिए? Order of magnitude of the given ratio. ये ध्यान में रखना. क्या चाहिए मुझे? Order of magnitude. Please students, I want the order of magnitude of ratio of gravitational force to electrostatic force between two electrons at a distance of 1 meter apart from each other. क्या ये clear हुआ students सबको? Students question clear हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Okay, try to get the answer. Let's see who can get the correct answer.
Sir, Yes. Done. sir, what have you written that last unit in the units table? Norman is put forward the answer. मैंने पूछा order of magnitude. Sir, no, वो I'm पूछा not मैंने. asking about question. तो ये बात. Sir, you have written that. Yes, sir. Yes. ये millicoulomb, microcoulomb, picocoulomb, nanocoulomb. Students. Okay, sir. Please, Norman has given the answer. Anybody? Anybody else? Norman, you are very close to it. I do feel so. You are correct in that case. You need to cross check it. I'm just waiting for one more person. If in case if I don't think Jay was the one who answers at your inner lectures or what. Jay. Yes, sir. आ रहा आंसर क्या नहीं आ रहा है? दीप आंसर आ रहा है? Calculation, sir. सर Okay. चैट में भेजो. हाँ अभी देखो. I've got the answer from Deep. Deep has given the answer, and Jazz. You have found out the ratio. Deep, you have found out the ratio of gravitational to electrostatics, or electrostatics to gravitational. So gravitational to electrostatics. Okay. So of course, तुम्हारा ऊपर Sir. negative धन होगा. Sir, Norman. I have found out electrostatic force to gravitational force. हाँ Norman, you are the one ना? You are answering हाँ? Yes. हाँ. उसने उल्टा find out किया. तभी मैं बोला कि ऐसे कैसे आ रहा है? Yes, sir. Reverse कर fast, come on. Okay, Jay, can you tell me what exactly order of magnitude means? Order of magnitude का मतलब क्या? Okay, Deep, you tell me. Sir, order of magnitude is in terms of power of 10. A into Okay. 10 to the power n, where A should be less than 5. Very good, very good. ये कहाँ पे पढ़ा तूने? Sir, 11. हाँ? हेमंत सर ने कि सोम सर ने बता दिया था पहले तुम लोगों को? Sir, no, you only told in gravitation. अच्छा, I told you in gravitation. हाँ Okay. सर, सेम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन किया था. अच्छा, तभी ये क्वेश्चन सेम पूछा था मैंने? नहीं सर, वो ग्रेविटेशन. ओके, तो यहाँ पे देखो नॉर्मन ने आंसर निकाला है. यस, कम ऑन. कैन आई सॉल्व? नॉर्मन, कैन आई सॉल्व नाउ? Yes. Okay, students, listen carefully now. Since when you're speaking about order of magnitude, so we go for the ratio of gravitational force to students' electrostatic force. The formula for gravitational force is G m1 m2 upon r square. The mass of electron is what? Say, can you tell me what is the mass of electron? Anybody?
9.1 into 10 to the power minus 31. Absolutely correct. 9.1 into 10 to the power of minus 31 kilogram. What is the gravitational constant की magnitude क्या है? 6.67 into 10 to minus 11. Minus 11. unit Newton meter square kilogram square inverse. Okay, ये ध्यान में रखना students. नीचे क्या होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वो क्या है? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2. Charge is the same upon r square. Any charge on electron is same. Can you tell me what is the charge on an electron? 1.6 into 10 to the power minus 9. Very good. 10 to the power of minus 19. मैं वैक्यूम में लिया क्या Pardon? सर आपने वो इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम में लिया क्या इलेक्ट्रॉन क्या लिया मैंने? फिर वैक्यूम में हाँ, ऑफ कोर्स कंसीडरिंग इन वैक्यूम ओनली. मैंने डायरेक्ट के लिए तो वैक्यूम ही लेना है ना. वैक्यूम में एयर में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Q for air और वैक्यूम इज द सेम. एग्रीड? और G तो इंडिपेंडेंट है. Yes, sir. इट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम. ओके, व्हाट इज 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू? 1/4 pi epsilon naught. 9 into 10 raised. Okay. Now when I go for the ratio, since instead of G, can I put 6.67 into 10 raised to minus 11 MKS unit? M square यानी can I say 9.1 into 10 raised to minus 31 the whole square? Divide ये r square तो gets cancel हो जाएगा क्योंकि r क्या है? 1 मीटर है दोनों के इसमें. Divided by ये क्या होगा? सर 9 into 10 raised to 9. ये क्या होगा? 1.6 into 10 raised to minus 19. Now solving it, students, can I say this is 6.67 into ये approximation के हिसाब से होगा तो 9 square कितना होगा? 81 point something. Okay, upon 9 into 10 is to what? Minus 62 हो जाएगा. Agreed? 9 into 16 square is how much? 256 into 10 raised to 9 into 10 raised to what? 19 2s are 38. क्या ये clear हुआ students? Sir, minus 11 10 raised to. Oh, very sorry. 10 to the power of minus 11 भी आएगा ये बात. Please, all the students, is it clear to all of y'all? To be students, lectures, my students, is it clear to all of y'all? Don't take it blindly, students. समझ के करो, नहीं तो it's of no use pushing yourself. समझ में आ रहा है, students? Yes, sir. Okay, Yes, अब मुझे yes. बताओ, who wants to continue from here onwards? Anyone? Who wants to answer from here? Order of magnitude के हिसाब से देना है तो क्या करोगे? हाँ बोलो, दीप. अच्छा, तारिक बोल रहा है. तारिक से. सर वो 6.67 का +1 हो जाएगा. ओके, इसका 10 1 हो जाएगा. 81 का सर 2 हो जाएगा ना. हाँ, तो यानी 81 को तो कहना है 8.1 into 10 raised to 1 है ना. 8 वापस 8 तो ये 10 raised to 2 हो जाएगा. फिर into 10 raised to minus 62 minus 11 है न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में क्या होगा? 10 raised to 2 आ जाएगा सर. 2 आ जाएगा. ये कैसे तो ये वाली है ना. दोनों का. अरे 2.56 is less than 2.56 is less than 5. सर इसका कुछ नहीं होगा. उसका कुछ नहीं होगा माय डियर. तारिक, getting it? हाँ यस सर. What exactly दीप ने क्या बोला मालूम है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर तुम एक्सप्रेस करते हो, ध्यान से सुनना, m into 10 raised to the power of n, and students, the value of m should be greater than 5. Then the order will increase by 1. Agar if it is less than or equal, we consider it 5 greater than or equal to 5, then it will increase. 5 या 5 से ज्यादा होगा तो increase, 5 से कम होगा no change. Agreed? यस सर. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? या नो चेंज होगा तो इनटू क्या होगा? ये तो 1 ही है. Into 10 raised to 9 minus 38. Now when you solve it, what's the answer you get it? 60, 70, 73 minus 73 and plus 3 तो कहने से 10 raised to minus 70 हो जाएगा ये. Agreed? ये कितना होगा? 9 and 1 10 minus 38 plus 10 कितना होगा? Minus 28. So that will be minus 10 raised to minus 70 plus 28. So what's the answer? 8, 9, Minus 10 42. minus 42. And who got it correct? Deep got it correct. Norman.
And students, you should have understood ये ध्यान रखना, gravitational force और electrostatic force के अंदर students कौन सा force I'll consider will be stronger? हाँ students, मुझे बताओ gravitational force और electrostatic force में कौन सा stronger force है? So electrostatic. Yes, gravitational force is the weakest of all students. जब भी मैंने FG/FE लिया तुरंत तुम्हारा आंसर नेगेटिव में ही आएगा. ऑप्शंस में स्टूडेंट्स हाउ टू ऑप्शंस में कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं. अगर मैं -42 में +42 भी दूं स्टूडेंट्स, इसमें मैं ऑप्शन दूंगा -42 +42 -36 +36. तो तुम्हारे दो ऑप्शन तो निकल ही जाएंगे क्योंकि आपने ऊपर न्यूमरेटर में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दिया है स्टूडेंट्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे वीकेस्ट होता है इन दैट केस. आई गेट कंपैरेटिवली वी कंसीडर. अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ तक की बात करूं ना स्टूडेंट्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इज अ न्यूक्लियर फोर्स वी कंसीडर. Electrostatic force is also considered, magnetic force is also considered. The weakest of all is a gravitational force. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अर्शिता समझ में आया? अर्शिता, Yes, sir. you're the only one who said it. Good afternoon. You always say thank you and that's the reason I'm asking you. तुम रिस्पॉन्ड करते हो इसलिए तुम्हें ना बुलाता हूँ और फिर पूछता हूँ. बाकी none of the girls speak it out. They're just sitting mum. And there are a few good guys who are really responding in that case and putting something across it. ये तो कुछ लड़कों की वजह से I feel like the batch is live. Otherwise the batch is completely dead. I feeling that way. Okay, can I erase this students? क्या मैं इसको erase कर दूँ अभी? Yes. Okay. Okay, students. Now we go for your principle of superposition of forces, students. So, ध्यान से सुनना. Principle of superposition of force का मतलब क्या है, students? Okay. अगर किसी ने पूछा principle, principle of superposition of electric field or electrostatic force. तो है क्या students? What exactly this means? Students, ध्यान से सुनना. यानी ये concept है क्या students? Which I told you last lecture itself only. Yesterday only I told you. इसके related we will be solving certain questions, students. तो ये है क्या students? Students, अगर तुम force के हिसाब से देखो या electric field intensity के हिसाब से देखोगे students, so suppose if I happen to give you a charge, at point P, okay, and if I say there is some force exerted on this particular charge at point P, यानी surrounding there are neighboring charges, students. Suppose if I say there is a charge Q1, a charge Q2, and a charge Q3. ये ध्यान रखना students. ये है positive, ये है negative और ये positive. तो अगर मैंने पूछा students, what is the resultant force? ध्यान से सुनना. What is the resultant force acting on a charge at point P? At point P due to the remaining charges. अभी ध्यान से सुनना. What is the electrostatic force acting at point P we consider? तो यहाँ पे मैंने point P पे imagine करना जरूरी है कि एक यहाँ पे भी मेरा चार्ज है. अगर suppose वो चार्ज मैंने दिया हो तो well and good. Students, दिया हो तो well and good. अगर नहीं दिया है
तो हमेशा आई कंसिडर एज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. So now suppose if I say I have considered a charge Q4 at point P, which is unit positive charge. I want to find out the force exerted on charge at point P due to Q1, Q2, Q3. तो सबसे पहले अगर इसके ऊपर फोर्स है तो ये सारे मेरे सोर्स बन जाएंगे. ये होगा मेरा सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3. डिस्टेंस कौन बताता है? सोर्स बताता है. तो ये हुआ तुम्हारा पोजीशन वेक्टर. पोजीशन shown by 1 where is 4, position shown by 2 where is 4, and position shown by 3 where is 4. ये तुम्हारा पोजीशन हुआ. Now if I want to go for the force, क्या होगा? सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन. So can I say this is force exerted on 4/1? Students try to understand. इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला क्या है फोर्स का फॉर्मूला? C Q4 Q1 upon R1 4 the whole square. This is the force exerted on 4/1. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. नेचर तो लोग ही नहीं स्टूडेंट्स. जब भी हम फोर्सेस के बारे में बात करेंगे ना, तो कंसीडर द नेचर. अगर मैं पूछूं व्हाट एग्जैक्टली द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 4/1, तो इन वेक्टर फॉर्म में ये होगा. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म में ये होगा. बाजू में क्या लिखूंगा? यूनिट वेक्टर 1 and 4. ये वेक्टर फॉर्म में हो गया. वैसे ही कैन आई से द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 4/3. अरे हाँ सर, इसका ये डायरेक्शन में होगा. यानी ये क्या होगा? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 4/3 and the position is shown by 3 where it is 4. नेगेटिव और पॉजिटिव ये मेरा सोर्स है स्टूडेंट. तो इसके लिए फोर्स किस तरफ जाएगा? इसके लिए फोर्स किस तरफ जाएगा? तो नॉट विल से सर इसके लिए मेरा ये जो फोर्स होगा वो इस तरफ जाएगा स्टूडेंट्स. because the direction of force students is always in the direction of electric field intensity we consider for a positive charge, but for a negative charge if I happen to consider it will be in the direction opposite. तो देखो, अगर मैं देखूं ये जो रेड इंक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये जो रेड इंक है, ये रेड इंक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए? सोर्स S2 के लिए स्टूडेंट्स, सोर्स S2 के लिए. ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है. तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज S2 की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ सर, क्योंकि देयर इज एन अट्रैक्शन स्टूडेंट्स. क्योंकि ये मेरा इफेक्ट है और सोर्स ये है, भले वो सोर्स नेगेटिव है फिर भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है. अभी मैं रिजल्टेंट कैसे निकालूं? हाउ डू आई फाइंड आउट द रिजल्टेंट? तो ये क्या होगा सर? ये होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन 4/2. तो अगर मुझे फोर्स निकालना स्टूडेंट्स, तो हाउ डू यू गो अबाउट? सो यू कैन गो बाय वेक्टर सम. द रिजल्टेंट फोर्स इज द फोर्स exerted on 4/1, force exerted on 4/2, force exerted on 4/3. ये हुआ तुम्हारा रिजल्ट वेक्टर सम. ये क्या है? तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. नाउ कैन एनीबडी टेल मी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बताओ. सबका फॉर्मूलाज मैंने दे दिया. ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय 4 and 1. सपोज अगर मैं बोलूं व्हाट एक्जैक्टली फोर्स एक्सर्टेड ऑन 4/2, तो फॉर्मूला क्या होगा? Q4 Q2 upon R24 raised to the power of 2. Force exerted on 4/3, C Q4 Q3 upon R34 the whole square. सबका फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स. अगर मैं इसको मैग्नेट में लिखूंगा तो ये होगा. बट नाउ कैन एनीबडी टेल मी हाउ डू यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स? कोई बता सकता है कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड? आई वांट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. एनीबडी कैसे निकालोगे? क्या करोगे? हाँ स्टूडेंट्स. Norman, can you answer? Tariq, can you answer? Deep. Which formula? Ankit is put forward by using formula. Which formula? That vector for Pardon? sir, that vector formula. Yeah, F41 square plus F4. Fine. What you are saying is absolutely correct, Harsh. लेकिन मुझे ये पहले बताओ कि तुम किन फोर्सेस के बारे में पहले सॉल्व करोगे? प्लीज, दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट विच स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तुम्हें तो ये एंगल तुम्हें देंगे. ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, तो इन दोनों का जो फोर्स है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में तुम्हें एंगल थीटा 110% देंगे.
जब भी तुम्हारे हाथ में थीटा आएगा तो तुम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तुम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ निकाल भी दूं तो देखो ये रिजल्टेंट और ये रीडिंग, स्टूडेंट्स अभी देखो ध्यान से देखना, चार्ट तुम्हारा ये था Q4, अभी ये Q4 के ऊपर कौन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? सर ये माइनस Q तो एग्जर्ट कर रहा है, उसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है। ये जो है ये किसकी वजह से है स्टूडेंट्स? ये जो हमें फोर्स मिला है किसकी वजह से? सर ये तो रिजल्टेंट फोर्स है, किसकी वजह से? किसकी वजह से? 1 और 3 की वजह से, ड्यू टू 1 एंड 3। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes, And sir. the angle of theta in that case, अभी दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? What is the angle between both of them? Can I say this is pi radians? हाँ स्टूडेंट्स, और whatever Yes. the angle you can get it, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो pi radians हो जाएंगे। तो इनका रिजल्ट कैसे निकालोगे? ये दोनों का रिजल्ट यहाँ पे आएगा, तो वो भी कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो भी होगा तुम्हारा क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स। So resultant will be simply given by what formula? It's a square plus b square plus 2ab cos theta। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Do take care whenever you are solving problem। ध्यान से और शांति से करना। अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो तो, अभी देखो दो चार्जेस होगा तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन एक से जब ज्यादा चार्जेस हो तो वो ध्यान में रखना, क्योंकि अगर कोई बाय चांस मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया स्टूडेंट्स और वो मेरा सोर्स बन गया तो अट्रैक्ट करेगा, हेलो, बाकी तो रिपेल कर रहे हैं, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन जब भी तुम प्रॉब्लम्स करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के या इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टूडेंट्स, कभी भी चार्ज का नेचर नहीं लेते। प्लीज यहाँ पे Q2 को नेगेटिव में मत लिखना, Q2 को नेगेटिव में मत लिखना whenever you finding out for electric field and force, because they are both You have vectors। to write again magnitude. Yeah, ना सपोज अगर मैंने वही यही क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से पूछा स्टूडेंट्स, तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। मैं सॉरी आंसर सेम नहीं, मेरा वर्किंग सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि सर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4d/1। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4d/3। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4d/2 वी कंसीडर। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सेम एग्जैक्टली सेम आएगा तुम्हारा। फॉर्मूला क्या होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? E = F/Q। सर यहाँ पे आपका ये Q4 चला जाएगा। देखो स्टूडेंट्स ये मेरा टेस्ट है, ये मेरा जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है वो चला जा रहा है, देखो ना Q4 नीचे होगा। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन Q4, फोर्स एक्टिंग ऑन Q4, एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? C Q1 Q4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 4 the whole square, and Q4 gets cancelled। ये Q1 की वजह से, यानी व्हाट इज साइन में फॉर्मूला? E = F/Q। F क्या है? C Q1 Q2 अपॉन R² डिवाइड बाय Q1, सॉरी डिवाइड बाय Q4, Q4 कैंसिल हो गया। तो देखो सिर्फ तुम्हारा सोर्स आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, यानी Q1 आएगा, Q2 आएगा, Q3 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। लेकिन वहां पे भी वेक्टर्स यूज करना स्टूडेंट्स। Is this clear students? Principle of superposition of electric field and force? Yes, sir. Okay. Yes, sir. क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ अभी? No, no, sir. हाँ आया ना? No, sir. Okay.
Yes, friends, can I erase now? Sir, 1 minute. Okay. Sir, done. Okay. Okay, so now I wanted to solve this particular question, students. Given to you, there are three charges, students. Okay, the answer is no. Three charges are given to you. 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, and 4 microcoulomb are placed at points A, B, C as shown. We consider. यानी अगर तुम देखोगे, it's a right angle triangle, students. I'll give it to you. This is point A, this is point B, and this is point C. And three charges are given to you. At point A, you have plus 2 microcoulomb. At point B, you have plus 3 microcoulomb. And at point C, I'm having plus 4 microcoulomb. Okay, so they are placed at the 3 point vertices of a triangle, of a right angle triangle. Determine the force on A. Determine the force on A. So find out electrostatic force on charge at A. Okay, resultant electrostatic force on charge at A, students. Is that clear? Given to you, I can consider as this is 4 centimeter and this is 3 centimeters. Also, magnitude of resultant force. Okay. Also, direction of result. I wanted to find out. So, समझ में आया question? Magnitude of resultant भी पूछा मैंने, direction of resultant भी पूछा. Get me the answer.
on anybody? Please, any one of you all try to answer as early as possible so that we can start discussing in that piece. No, my dear, Deep. Deep गलत गया तो. This you have found out the force or what? Resultant force, Deep. हाँ Deep. What, sir? You have found out the resultant force. ये resultant force निकाला तुमने. हाँ sir. गलत है. Solve for it, students. Shall I solve? Yes. Students, answer देखो. सबसे पहले तुम्हें फोर्स ये ए पे ना बी की और सी की जरूरत. सबको पता है हाउ टू गो अबाउट विद इट. लेकिन क्या हो रहा है मालूम है, ये तुम्हें कैलकुलेशन तुम्हें लेंदी लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स लेंदी कैलकुलेशन नहीं है. फोर्स कैसे निकालोगे मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स. फोर्स कैसे निकालना? तुम बोलोगे सर इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों का फोर्स अगर तुम लेते हो लेकिन एंगल तो नहीं पता. आ सकता है ना. ये देखो ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए. सर फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी है ना, ए पे है ना फोर्स, और ये बी सोर्स हो जाएगा तो सर ये तो रिपल्शन इस तरफ जाएगा. यानी अगर मेरा चार्ज यहाँ पे है तो एक फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा है, ये ए है ना. ये क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी. सी का इस तरफ जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय सी. ये एंगल नहीं पता. क्यों नहीं पता? हो सकता ना ये 3 है, ये 4 है. बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस ये 5 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट्स. तुम्हारा मैजिक ट्रायंगल जो मालूम था 37 डिग्री, 53 डिग्री, सॉरी ये 37 होगा और ये 53. स्टूडेंट्स ये पता है क्या पता? 37 एग्जाम वाला 3 और ये 54 आ गया ना तुम्हारा. तो देखो ये 37 और ये ऐसा जा रहा है तो कहने से ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तो ये 37 डिग्री आ गया मुझे. आ गया दोनों के बीच में, फोर्स के बीच में एंगल आ गया. हाँ स्टूडेंट्स, क्या मैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय सी सकता हूँ? तो क्या होगा? सी चार्ज ऑफ ए, चार्ज ऑन सी. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? 5 स्क्वायर, यानी 5 × 10⁻² the whole square. स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? फोर्स एक्सर्टेड हाँ सर. ऑन ए बाय बी. ये कूलम्ब्स कांस्टेंट स्टूडेंट्स 1/4 by एप्सिलॉन नॉट. ये क्या होगा? चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन बी अपॉन ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? r². इसको मैं ले लेता हूँ F1, इसको मैं लेता हूँ F2 स्टूडेंट्स. तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? सो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा? √ क्या होगा? F1² F2² 2F1 F2. cos of what है? Cos of this angle students, and this angle will be 37 degrees. What is cos of 37? The cos of 37 everybody knows it. What is angle 37? Adjacent upon hypotenuse 4/5 0.8. क्या वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो? Why not? क्या तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैग्नीट्यूड. हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ. Yes sir. Yes, अभी सॉल्व कर. दीप नाउ सॉल्व इट. ओके
तूने क्या गलती किया था दीप? हाँ दीप, ऐसे किया था क्या समथिंग डिफरेंट? मैं सेम किया था सेम। क्या बोला? व्हाट डिड यू से? सर सेम मेथड से किया था लेकिन गलती मिल नहीं रहा है। तो फिर गलती कैसे हो गया? तो फिर आंसर गलत क्यों आ रहा है? 37 डिग्री लिया था तूने? हाँ सर 37 ही लिया 4/5। तो फिर कहाँ पे गलत गया? तो चेक कर। QA and QC, that's 2 4 2s are 8 into 10 raised to minus 12 हो जाएगा। ये होगा 25 into 10 raised to minus 4। ये होगा C into QA into QB, 3 2s are 6 into 10 raised to minus 12 upon 16 into 10 raised to minus 4। ये होगा C into 8 into minus 12 plus 4 will be 10 raised to minus 8 upon 25। और ये होगा C into 2 3s are and 2 8s are, so it's 3/8 into 10 raised to minus 12 minus 4 will be minus 8. That many Newton, that many Newton. Please try to get the correct answer. सब में सी स्क्वायर आएगा, वो तो बाहर आ जाएगा, सी आ जाएगा, सिर्फ बाहर बाहर तो सी आ जाएगा, सी को लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ स्क्वायरिंग ऑफ दिस एंड एडिशन। ट्राई टू गेट द आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे तुम्हें आंसर मिलना चाहिए 59.3 न्यूटन आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 60 आना चाहिए। यानी कि अभी तुम स्क्वायर रूट निकालोगे स्टूडेंट्स तो पूरा तुम्हें आंसर मिलना चाहिए 3600। अगर तुम सी स्क्वायर को भी अंदर लेते हो और पूरा सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग मोर देन 3600 स्टूडेंट्स। चेक दिस फैक्ट। दीप ये चेक कर। Yes, anybody is getting the answer?
Is anybody getting the answer or not? Huh? Just when you're trying, just try to go for the square part of it. Now, why do you take so much of time in that case? अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा सी स्क्वायर सब में आएगा ना. देखो ना, यहाँ पे भी आएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे तो f1 f2 आएगा, तो 2 into what c into c, सी स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, तो रूट में मानेगा तो c बाहर आ जाएगा. अभी मैं f1 स्क्वायर लेता हूँ, यानी इनका स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, ये चीज का स्क्वायर होगा. एग्रीड? तो अगर मैं एस्टिमेशन से भी करूँ तो 8 स्क्वायर इज हाउ मच? 64 स्टूडेंट्स. 25 स्क्वायर इज 625 into 10 raised to minus 16 हो जाएगा. दूसरे के लिए अगर मैं करूँगा तो 3 स्क्वायर इज 9, 8 स्क्वायर इज 64 into 10 raised to minus 16 हो जाएगा. प्लस twice of this we consider, यानी 2 into 8 by 25 into 3 by 8 into 3 by 8 है ना, into what? 10 raised to minus 8 and minus 8 minus 16 into cos of 37. What is cos of 37? 4 by 5. क्या इसको तुम सॉल्व कर सकते हो अभी? ये देखो, ये इससे कैंसिल हो गया. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 8 3 से 24 स्टूडेंट्स, 24 और 25 इसको पूरा मैं निकाल देता हूँ 1. ये 1 by 5 यानी मैं लूंगा स्टूडेंट 0.5 into 10 raised to minus 16. एग्रीड? ये अगर मैं लूंगा 9 upon 64 भी कंसिडर. So what exactly? 9 7 से 63, तो 1 by 7 होगा. So this is 1 by 7. Now what is 1 by 7? 0.71 से 73 यानी 0.14 होगा. Into 10 raised to minus 16 होगा. एग्रीड? इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर सपोज मैं यहाँ पे डेसिमल लेता हूँ स्टूडेंट्स, into 10 upon 10 अगर मैं ले लेता हूँ, getting it? If in case if I say 10, if I want to consider in decimal in that case, so divide by 10. तो क्या होगा? 64 upon 62, तो ये भी 1 पॉइंट में आ जाएगा स्टूडेंट्स. ये ऑर्डर तुम्हारा -15 का -15 हो जाएगा. स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारा? Is this clear to all of you all? Yes. Now suppose अगर यानी ये तुम्हारा आंसर 1 में आया, अभी देखो ये तुम्हारा 0.14 और ये 5 हुआ, तो करें सर अप्रॉक्सीमेटली देखो 0.6 आ रहा है. हाँ स्टूडेंट्स, if you try to solve it in this case, you can get your answer very close to it. और ये -16 -6 भी कंसिडर, यहाँ पे भी तुम्हारा -16 होगा. -42 रूट निकालोगे तो व्हाट एग्जैक्टली विल गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली. बाहर तुम्हारा कितना है? सी स्क्वायर का सी का बाहर आ गया 9. यू सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर इज 59.3. यू विल बी गेटिंग इट स्टूडेंट्स. लेकिन ये तुम्हारे स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू टाइप नहीं है, ये तुम्हारा सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन विद द लेंथियर पार्ट ऑफ इट. अगर सपोज मैंने डायरेक्शन पूछा स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे बताओ? कैन यू टेल मी हाउ टू गो अबाउट द डायरेक्शन? स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी अबाउट द डायरेक्शन? क्या करोगे? तो देखो इन दोनों का रिजल्ट इस तरफ होगा at an angle alpha. Do you remember the formula for alpha? Tan inverse. Students, ये मैंने सपोज अगर फिर किस if I happen to consider इसको मैंने P ले लिया और इसको मैंने Q लिया, तो याद आ रहा है? tan inverse Q sin theta upon P plus Q cos theta. क्या ये क्लियर हुआ डायरेक्शन? हाँ स्टूडेंट्स, कुछ इज दिस क्लियर विद ऑल ऑफ यू ऑल? अगर मैं फोर्स AB को मैं P लेता हूँ, फोर्स AC को मैं Q लेता हूँ, व्हाट एक्चुअली अल्फा विल बी tan इनवर्स Q sin theta upon P plus Q cos theta. स्टूडेंट्स ये तुम्हारा कैलकुलेशन ट्रिकी बना रहा है, लेकिन अगर मैं सपोज इफ आई गिव यू सम गुड वैल्यूज इन दैट केस and very easy way of approach in that case where you can get your answers,
then you can easily find out the direction of the resultant. और students ये जो direction में मुझे मिलेगा ना, that will be with respect to force AB, horizontal, क्योंकि ये तुम्हारा vertical हो जाएगा. क्या ये clear हुआ students सबको? Yes. Can I erase this now? Yes. Okay, students. Now I'm going to give you a question which is a kind of an multiple choice question. Students, ये सबको आना चाहिए ना students, please. 3-point charges are placed at the vertices of an isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle. Okay. And 3-point charges are placed at the vertices of isosceles. This is C, this is B, this is A. The charge over here is plus 10 microcoulomb. यहाँ पे भी plus 10 microcoulomb, and over here is plus 2 microcoulomb. So 3-point charges are placed at vertices of a right angle isosceles triangle. What is the magnitude and direction? Direction में पूछा. What is the magnitude and direction of resultant electric field intensity? Of resultant electric field intensity, students. अभी E पूछा ना. Okay. At a point P. At point P. On the hypotenuse, such that Cp is equal to Pa. ये given है, students. I repeat, magnitude and direction of resultant electric field intensity at a point P on the hypotenuse such that Cp is equal to Pa. Okay, the sides of the isosceles triangle I'll give it to you. This is 5 centimeter. This is also 5 centimeter. Friends, क्या ये question clear हुआ? Yes. Now please, everybody should get the answer. इसके लिए time मत निकालना students, please. Try to get it as fast as possible. मुझे direction भी चाहिए students, magnitude and direction both. One who finishes first will start discussing. So Deep, come on, Norman, fast. Hare, fast. Harsh. Harshita, do it fast. Harsh, Bhargav, Deep, Harshita, Norman, Jay, Siddharth, Tarek. Please try to give the answers as fast as possible.
Come on, answer. Deep. Norman, what about you all two? Getting it or not? Sir, doing. Sir, Yes. so I'm getting 7.2 into 10 to the power 6 coulomb. 7.2 into? 10 to the power 6. ऐसे कैसे आ रहा है तेरे का? Deep, you are answering Deep. Yes, sir. क्यों गलत क्यों जा रहा है वापस? मैं वापस सॉल्व करता हूँ. आंसर ले. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? प्लीज स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सर E is equal to 1/4 pi epsilon naught. मीडियम तो हमें वैक्यूम ही लेना है ना? नीचे तो इफेक्ट तो आएगा नहीं, तो क्या होगा? सोर्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना? और इसका यूनिट किस में होगा? न्यूटन कूलम इनवर्स. नाउ लेट अस गो फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैंने पूछा था एट पॉइंट P, व्हाट इज दैट? Cp is equal to P है. ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी उसका मतलब मैं क्या सोचूं? मैं सोचूं कि यहाँ पे पॉइंट P पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स. क्योंकि देखो फॉर्मूला में मुझे सोर्स लिखना है, इफेक्ट तो मेरा आता ही नहीं है, तो ये इफेक्ट वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स. यहाँ पे तुम्हारा इफेक्ट हो रहा है, तो अज्यूम कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ये अजम्पशन करना जरूरी है. अभी मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके डायरेक्शन में होगा? सर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा. तो इसके ऊपर कौन कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो मतलब सर बी भी करेगा, ए भी करेगा, सी भी करेगा. हम पहले जाते हैं ए और सी के लिए. तो ए और सी में सर ए और सी का तो सेम ही होगा, डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है. अगर मैं बोलूँ कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन पी बाय ए, तो व्हाट एग्जैक्टली सर? ये होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन. सर वो कैंसिल होगा ना? हाँ वो और सी का कैंसिल हो जाएगा. दीप तुमने कैंसिल किया, वो हर्ष ने कैंसिल किया है. हाँ सर, वो कैंसिल किया. तो फिर क्यों तेरा गलत आ रहा? मुझे ये पता नहीं चल रहा है. ये पूरा अभी ये पूरा सॉल्व करेगा प्लीज. नाउ कैन आई से फोर्स एक्सर्टेड ऑन P by C, तो ये भी इस तरफ जाएगा, तो ये भी तो कैंसिल हो गया. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स एट पॉइंट P ड्यू टू A, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू C स्टूडेंट्स. So what exactly is electric field intensity students? Electric field intensity at point P due to A is equal to electric field intensity at point P due to C. It's equal in magnitude opposite in direction. तो resultant electric field intensity क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो इसकी वजह से तो फील्ड इंटेंसिटी है नहीं. अब ये फील्ड इंटेंसिटी P पे किसकी वजह से? B की वजह से. तो कहना से इट्स गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन ओनली. तो डायरेक्शन तो मिल गया. व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is in the direction. Resultant electric field intensity is in the direction of vector BP. What is BP? What is BP? सर ये 45 क्योंकि आइसोलेस है, ये 90 होगा, ये 45, ये 45 होगा, है ना? तो कहना साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्रीज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज द डिस्टेंस? 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज. कहना से 5/√2 सेंटीमीटर. अरे हाँ सर डिस्टेंस मिल गया. अभी देखो B is now going to exert a force at point P. तो ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to B. ये तुम्हारा रिजल्टेंट ही आ गया. What is the distance R? R क्या है? सर R है 5/√2 into 10⁻⁻². मीटर में आ गया. What's my formula for electric field intensity? सर ये होगा 9 into 10⁻⁹. सोर्स कौन है? सर सोर्स ये है 2 into 10⁻⁻6 divided by what exactly? R square. And can I say 5/√2 into 10⁻⁻² the whole square. Now solving this, what exactly? 9 2s are 18. ये 2 ऊपर चला जाएगा upon 25 into what? This will be 10⁻⁹ -6 -4 ऊपर चला जाएगा तो +4. Agreed? Yes, sir. So now what exactly the answer will consider will be? क्या आंसर होगा बताओ? हाँ, what is the answer? I'm going to get it. So 1.44 into 10 to the power 7. और तेरा क्या आ रहा था?
तो मेरे मैं एक 2 भूल गया था। हाँ, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का आंसर क्या आ रहा है तुम्हें? ये तुम्हें मिलेगा स्टूडेंट्स 1.44 इंटू वॉट, 10 टू द पावर ऑफ कितना होगा? 7 हाँ 7 आ जाएगा। एग्रीड? Yes. न्यूटन कूलम इनवर्स, ये तुम्हारा आंसर आ गया। डायरेक्शन क्या होगा बताओ? so at an angle 45 degree to BA. Very good, very good. At an angle of 45 degrees with respect to BA. Students, direction कैसे होगा मालूम है? It's B cos of 45 we consider with respect to BA. यानी sorry, ये तुम्हारा direction is BP only. बात सुनो ना, direction is BP itself only. So cos of 45 degrees with respect to BA, students. Cos of 45 degrees with respect to BA, ये होगा तुम्हारा डायरेक्शन। और ये वेक्टर फॉर्म में अगर हो तो cos of 45 आ जाएगा। यानी इसको अगर तुम सॉल्व करो तो क्या होगा? What is BA students? BA कितना है? 5. What is cos of 5? 45 √2. What's the answer? 5 by √2. 5 by √2 where? In the direction of vector BP. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Okay. Can I erase this? Yes. Yes, sir. Arshita has got the answer. See? Okay, students. Now suppose if I give you a simplified model, students answer करना, okay? एक मैं simplified model of a hydrogen atom देता हूँ students, okay? That is protium, okay? A protium atom is given to you students, okay? मेरा question है students, the charge on proton is known to you, charge on electron is known to you. मेरा question है students, calculate intensity of electric field. Calculate electric field intensity due to proton. Calculate the electric field intensity due to proton. Due to proton. In a protium atom. क्या ये clear हुआ students? Question. Calculate electric field intensity due to proton in a protium atom. Is this clear to all of you all? Yes. Okay. दूसरा, also calculate the electrostatic force. Also calculate the electrostatic force using electric field intensity. Find out electrostatic force using electric field intensity. Get me the answer for these. And please get it faster.
हाँ, दीप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अब दीप ये क्या कर रहा है दीप यार, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है दीप, अभी भी गलत जा रहा है तू, इतना घायल क्यों कर रहा है तू? हाँ दीप, दीप तूने जो पोस्ट किया आंसर वो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का है। हाँ हाँ सर। गलत जा रहा है माय डियर। Sir, can you tell the question? My question is, students, find out the electrical intensity due to proton in a protium atom and find out the electrostatic force using electric field intensity. क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं है ना सब लोगों को स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। दीप मुझे ये बता प्रोटियम एटम का मतलब क्या है? हाँ दीप, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटियम एटम? सर 1 proton and 1 electron. तो फिर क्यों इतना तू कर रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है क्या हो क्या गया तेरे को? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू प्रोटॉन पूछा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तुम्हें निकालना ना, तो प्रोटॉन तेरा सोर्स हो जाएगा ना। इफेक्ट किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है ना। और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे, कौन से ऑर्बिट पे है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? ऑर्बिटल रेडियस। हाँ सर 0.53 into 10 to the power minus 10. हाँ तो सब तो वैल्यूज तो सही डाल रहा है, पूरा सही कर रहा है, तो फिर कहाँ पे गलत जा रहा है तू? स्टूडेंट्स ही इज डूइंग इट एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रोटियम एटम का मतलब क्या स्टूडेंट्स? प्रोटियम एटम इज हाइड्रोजन, द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स तो मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? 1/4 pi epsilon naught। वैक्यूम लेता हूं मैं, एग्रीड? Sir, is it अच्छा, ऑर्डर ऑफ 51 मैग्नीट्यूड point ठीक है। something into 10 to the power 10? क्या क्या बोल रहे हो? Sir, 51 point something into 10 to the power 10. 51 नहीं है, 5 पॉइंट। अच्छा चलेगा, पर चलेगा, 51 है ना। तूने क्या बोला, 50 हाँ बोला ना सर तूने? हाँ तो बराबर है। 51 point. हाँ सर वही। हाँ हाँ बराबर है। अब गलत क्यों किया मुझे बता फिर तो। सर मैं वो स्क्वायर करना भूल गया रेडियस का। वेरी गुड, सारे प्रॉब्लम्स तू सही जा रहा है, तेरे फॉर्मूला सही किया, लेकिन तू घाई कर रहा था। Students, what exactly electric field intensity is? 1/4 pi epsilon naught। सोर्स क्या है सर? चार्ज ऑन अ प्रोटॉन अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r स्क्वायर। सर ये जो ऑर्बिटल रेडियस है वो क्या होगा? ये जो ग्राउंड स्टेट की है स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड स्टेट, and see you knows that 0.53 angstrom we consider, and it's 0.53 into 10 raised to minus 10 meter। और देखो तुम्हारा ये क्या होगा, 9 into 10 raised to 9। what's the charge on a proton? पॉजिटिव चार्ज है, तो 1.6 into 10 raised to minus 19 स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी क्या होगा ये, अगर मैं into 10/10 करूंगा तो क्या है 5.3 into 10 power of minus 11 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर स्टूडेंट्स, कैन आई गेट आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? और तुम्हें आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स 5.1 into 10 raised to 11 न्यूटन कूलम इनवर्स। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes. अभी मुझे बताओ फोर्स, फोर्स कैसे निकालोगे? गेट मी द आंसर फॉर फोर्स आल्सो प्रॉपर्ली। Sir 82 into 10 to the power minus 9. एब्सोल्युटली -5। Minus 9, 82 into 10 to the power हाँ minus 9. हाँ 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 हाँ, बराबर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसके लिए तूने? फोर्स के लिए क्या किया फिर सर तूने? मल्टीप्लाई बाय क्यू कर दिया है वो। बस बस मैंने बोला ना। और ये मुझे अगर मैं नहीं बताया तो तुम लोग कोई स्टूडेंट्स 1/4 पर, लेकिन ये इजी है,
E is equal to F by Q, बस खत्म हो गया. जो force मिला है students, तुम्हें force चाहिए ना, तो what exactly force? A into Q. ये Q क्या है students? ये Q क्या है? ये है electron के बारे में. So it is the force acting on negative charge. और charge तो same है. Charge on an electron, students, charge on an electron and charge on a proton is the same. 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. तो force क्या होगा? Sir, E कितना है? 5.1 into what? 10 to the power of 11 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. So the answer for this, what exactly will get it as? We'll get it as 8.16 students into 10 to the power of 8 Newton. Sir, -8. Why minus? Why minus? Sir, बताओ. -19 plus 11, 10 to the power. क्या बोल रहे हो? Sir, 10 to the power -19 plus 11. Oh, very sorry. Minus it. Yes. Very sorry. 11 minus it. और ये कौन सा force होगा? Attractive. कौन सा force होगा? Attractive. And there's a force exerted by the nucleus onto the charge. Since can I erase this? Yes. Okay. Since can anybody give me the graph of electric field intensity, students? Okay. Electric field intensity or Coulomb's force due to position of a charge, students. Yani with respect to position, students. I want a graphical representation. कैसे होगा ग्राफ? E का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है? 1/4 pi epsilon naught k. Sir, infinity से आएगा और 0 की तरफ जाएगा पैराबोलिक में. Very good. पैराबोलिक होगा कि हाइपरबोलिक होगा? हाँ सर, वही मतलब वो हाँ, A इक्वल टू R स्क्वायर है और फोर्स क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught k for a medium, capital Q small q upon R square. स्टूडेंट्स ये होगा न्यूटन कूलम इनवर्स, ये हो गया न्यूटन. एंड तुम दोनों की तरफ देखोगे तो स्टूडेंट्स E is inversely proportional to R square and F is inversely proportional to R square. स्टूडेंट्स अगर तुम ग्राफिकल वे देखोगे ना तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा व्हाट्स गोइंग टू हैपन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी. तो ये होगा तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ E. I getting it in terms of it? If in case if I happen to consider in this case your electrostatic force, if I happen to consider this case, will be again the same part. लेकिन ये जो तुम्हारा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? Electric field intensity is also inversely proportional to R square. The graph will be simply, students, it's a hyperbolic graph, students. अगर कल किसी ने पूछा तो what exactly the graph will be? The graph will be a hyperbola. Is this clear to all of you, students? Yes. Now, Yes. students, now suppose अगर मैं बात करूँ students ध्यान से सुनना. If I happen to go for the concept of electric dipole moment, students, what exactly electric dipole moment? Listen carefully, students. अगर मैं electric dipole के बारे में बात करूँ तो है क्या students? Negative charge, positive charge. Students, जिनका center separate है, very well separate, at a distance 12 apart. तो ये एक dipole form करता है, students. This results in formation of a dipole, we consider. Negative and positive charge separated a finite distance apart from each other. That results in formation of a dipole, we consider. उनका center of charges दोनों का separate होना जरूरी है. तो ये polar molecules के हिसाब से होगा.
अगर कोई पूछे व्हाट एक्जेक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2L into Q, हाँ क्या बोल रहे हो? the distance into charge, Q into 2L. वेरी गुड, इट्स q into 2l। अभी मुझे बताओ ये Sir, डाइपोल from मोमेंट, negative to positive charge direct. हाँ लेकिन ये डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर है, इट्स अ वेक्टर। और जो जो दीप ने बोला वो सही है। अगर तुम इसका यूनिट देखोगे तो यूनिट क्या होगा सर? इसका यूनिट तो कूलम में होगा और ये मीटर में आ गया। दूसरी बात, अगर वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन उसने क्या बोला? व्हाट एक्जेक्टली ही सेड इट देयर? he said that the direction of electric dipole moment is from where to where? So it's directed from where to where? From negative charge to positive। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम -q टू +q, ये ध्यान में रखना। लेकिन मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये मोमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? मोमेंट का मतलब हुआ टर्निंग इफेक्ट। क्या डाइपोल टर्न हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। स्टूडेंट्स ये दोनों डाइपोल है, उनका चार्ज सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम ही है। तुरंत तुम्हारा आंसर है हाँ सर सेम ही होगा ना, आपने हमें कल बता दिया था। अगर मैं सपोज दो हाइड्रोजन एटम लेता हूँ स्टूडेंट्स, और ये ऑक्सीजन एटम आया मेरा, दोनों के बीच में एंगल 106 डिग्री था, तो ऑक्सीजन के अंदर डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन में एक एक्सेस था, तो क्या हुआ? उनका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसको चार्ज +1 मिला, ये हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +1 हो गया, तो इनका दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे आया तो +2 भी हो गया। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने ले लिया, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो उनका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा? -2 ही। अरे हाँ सर, इसका आपने बोला था -q, इसका आपने बोला था +q, and that results in formation of a dipole. Are they very well separated from each other? Yes, ये एक डाइपोल हो गया। क्या ये डाइपोल टर्न हो सकता है? हाँ सर, आपने ये भी बताया था, ये भी बताया था। आपने बताया था कि अगर मैं कोई प्लेट लेता हूँ, अगर सपोज मैंने कोई प्लेट लिया है स्टूडेंट्स, नहीं बताया था मैंने? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और अगर सपोज ये डाइपोल को, सपोज अगर मैंने शीट ऑफ माइका लिया या कोई डाइपोल लिया, उसको रस्सी से बांध दिया, और वो डाइपोल ऐसे अलाइन है स्टूडेंट्स, और उसको मैंने रिलीज किया, तो क्या होगा? वो टिल्ट होगा कि नहीं? फ्लिप होगा कि नहीं होगा? यस, क्योंकि ये हाँ सर। इलेक्ट्रिक, तो वो टर्न होगा कि नहीं होगा? टर्न, वो टर्निंग को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट। समझ में आ रहा है? तभी जाके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर में मिलती है, बाहर की तरफ E0 है, अंदर की तरफ EI है, रिजल्टेंट E0 minus EI। So do electric field lines can pass through an insulator? Yes, but they cannot pass through a conductor. So now we try to understand what electric dipole moment. Electric dipole moment, students, is defined as a product of magnitude of any one charge and the distance between the two charges, unit is coulomb meter, directed from negative to positive. अभी सपोज मैं कोई ऐसे डाइपोल तुम्हें दे भी दूं, सपोज अगर मैंने ऐसे कोई डाइपोल दे दिया स्टूडेंट्स -q, ठीक है, और +q, और ये तुम्हारा डिस्टेंस है 2l। ना सपोज अगर इस डाइपोल को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, external electric field. What kind of field is this? ये कौन सा फील्ड है? तुम बोलोगे सर यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, ओके, फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स। मुझे बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा डाइपोल का? डाइपोल क्या करेगा? रोटेट करेगा। रोटेट करेगा। तो मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? कल ही बताया था, इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जाता है, प्रोटॉन कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज कौन से डायरेक्शन में है? सो पॉजिटिव चार्ज विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, negative charge will go in the direction opposite to the electric field. हाँ या ना? हाँ Yes. सर। हाँ या ना? तुम्हें इसको कैसे समझना है यार? इसको समझने के लिए तुम ये लाइंस को मत देखो, तुम ये सोचो कि यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई है और यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई है। स्टूडेंट जब भी स्टूडेंट्स को ये डायग्राम दिखाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अभी देखो, इसको समझने के लिए तुम क्या करोगे, ये सोचो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट रखी हुई है स्टूडेंट्स, ये देखो 3 डायमेंशनल व्यू दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट रखी हुई है।
ये जो पोर्शन है उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया। ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है ना। देखो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉटेड गई कि नहीं गई। यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम डायग्राम देखोगे तो कोई प्लेट ड्रॉ नहीं करता, सिर्फ लाइंस बता देता है और बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमेशा विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी देखो ये डायपोल तुम्हारा किस तरफ जाएगा, अरे हाँ सर सीधा हिसाब है, ये तो नेगेटिव चार्ज है सर, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव प्लेट के पास में जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज है वो तो नेगेटिव प्लेट के पास में जाएगा। अरे हाँ सर इसलिए आप बोल रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज विल मूव in the direction of electric field and negative charge will go in the direction opposite the electric field, and can I say it's going to undergo rotational motion, so can I say there will be some torque. Friends, there will be some torque. Let us say the Yes, dipole undergo on a certain rotational, let us say the angle deviate we consider as d theta. So can I say there is some torque acting on the dipole? Is there any torque acting on the dipole? Yes, there will be some rotational, है ना, एक torque create होगा, there is a force acting. Now can you find out the formula for torque? बताओ अभी स्टूडेंट्स, कोई डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला? मुझे बताओ स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन में टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? हाँ स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन में टॉर्क का फोर्स इनटू मोमेंटम। यस, आर क्रॉस एफ तुम लिखते हो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैंने क्या किया मालूम है, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। ये रोटेट करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, प्लीज पे अटेंशन ना, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ले लिया और इस एंगल को मैंने थीटा बना दिया। स्टूडेंट्स what exactly you consider torque का फॉर्मूला क्या है सर? Torque is given by what formula sir? It's r cross f into sin, ये क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। तो साइन ऑफ क्या आएगा, एंगल आएगा। मुझे बताओ ये एंगल क्या है, ये एंगल किस रेंज में होता है? तो तुम बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर और फोर्स में, आया ना, यानी मोमेंटम और फोर्स के बीच में, एग्रीड। तो ये देखो ये तुम्हारा फोर्स जा रहा है, ये तुम्हारा मोमेंटम है स्टूडेंट्स। ये जो तुम देखोगे ना, ये तुम्हारा मोमेंटम है। अगर सपोज मैं इसको असाइन करता हूँ स्टूडेंट्स ए, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ए पॉइंट बी एंड पॉइंट ओ, तो स्टूडेंट्स ये जो आर देख रहे हो ना तुम, ये जो आर देख रहे हो ना, ये तुम्हारा मोमेंटम है, ये तुम्हारा फोर्स हुआ, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ध्यान से देखना, ये मोमेंटम है। प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारा एओ है स्टूडेंट्स, ये मोमेंटम, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है और इस तरफ भी तो एक फोर्स एक्ट हो रहा है। क्या ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स है कि नहीं है? हाँ स्टूडेंट्स, ये फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है सर? एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्ट हो रहा है। ये फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है सर? नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक्ट हो रहा है। क्या ये रोटेट करेगा? हाँ सर रोटेट करेगा। तो व्हाट एक्चुअली द एंगल बिटवीन देम? साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 विल बी 1। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? r cross f, r into f. Can I write an r in terms of sin theta we consider? Why not we consider? I can put it in that manner. Is that clear? तो अगर मैं r f भी नहीं भी लिखूं, then also I can consider this case. I can get your answer. What exactly sin theta students? Sin theta को कैसे लिखोगे student? देखो sin theta will be equal to what? Opposite of r by 12 होगा कि नहीं होगा? तो can I write an r को कैसे लिखूंगा students? ध्यान से देखना students, r को कैसे लिखूंगा मैं? Sin theta 12 into f. Students, are you getting it? Yes, sir. Okay, that's how we consider, we take it. Now suppose if I happen to consider in terms of it, ये f क्या है तुम्हारा? फोर्स है। हाँ स्टूडेंट्स, फोर्स, ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है स्टूडेंट्स? ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? तो कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इन टर्म्स ऑफ इट? तो तुम क्या बोलोगे सर? E is equal to क्या होगा? वेरी गुड, देखो आंसर दे रहा है। E को कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? E is equal to what? F by Q। तो F को कैसे लिखोगे? sin थीटा into 12, F को कैसे लिखोगे? E into Q। क्या ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. What is Q into 12 students? What is Q into 12? Dipole moment P. P,
आप पीछे आ गया ई, तो कहने से मैं फॉर्मूला इस टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। देखो कहने से टॉर्क इज इक्वल टू पी बार करो सीधा। Yes, sir. Agreed. What is the unit? Newton meter. Students, what is the unit? Newton meter भी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना, अगर मैं डाइपोल लेता हूं तो डाइपोल का मतलब क्या, टू चार्जेस are very well separated by a finite distance having magnitude of charge same. What is electric dipole moment? तो कोई बोले तो मतलब product of magnitude of any one charge into distance between the two charges. क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर कोई डाइपोल को तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या वो रोटेट करेगा? हाँ से रोटेट करेगा, तभी यहाँ पे आपने मोमेंट बताया। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? आर क्रॉस एफ। एफ और मोमेंट नाम की तो 90 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम ही है। फिर मैंने क्या किया, आर को मैंने साइन थीटा में लिखा है, व्हाट इज साइन थीटा? आर बाय एल, तो आर को मैंने साइन थीटा इनटू 12 लिख दिया। एफ को क्या लिखा? पी इनटू क्यू। व्हाट इज क्यू इनटू 12 इज? क्यू इनटू 12 विल बी पी इनटू ई साइन थीटा, तो कहने से पी क्रॉस ई। यानी स्टूडेंट्स ये जो थीटा है इज द एंगल बिटवीन व्हाट? पी एंड ई। पी एंड ई, दैट इज थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट and external magnetic field. Is this clear? Friends, क्या clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको erase करूं? Yes. No, sir. Yes, sir. No, sir. 1 minute. Okay, Harsh. Sir, Yes. Erase. so can you tell what is theta? My dear, ये जो The theta है angle between. एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, ध्यान नहीं देखना, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये हुआ मेरा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और ये है एंगल थीटा, तभी जाकर मेरा साइन थीटा है। एग्रीड? पी का डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर, ये भी लिखना, यूनिट इज न्यूटन मीटर। Sir, 1 minute. या doesn't matter.
Okay. Friends, I've given you the formula for torque. कोई मुझे work done का formula बता सकता है? चलो, derive the formula for work done in rotating a dipole. Work done in rotating a dipole in an external uniform electric field. Since तुम्हारा formula torque is equal to P cross P, electric dipole moment is equal to Q into 2. That is Coulomb meter. This is Newton meter. P का direction is from minus Q to plus Q. मैंने पूछा find out the expression for work done. ये सोचो ना कि suppose अगर ये dipole rotates at an angle, very small angle d theta students. क्योंकि ये rotational motion है students, rotate हो रहा है. So suppose if I say that the dipole rotates at an angle very small theta, what about the work done in rotating? It's also very small. So can I say work done will be given by what formula? Sir, work done is given by the formula force into displacement. अगर मैं Fs लिखूंगा तो सर वो तो लीनियर मोशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोटेशनल है. तो मैं सर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी थीटा पे कंसीडर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स. Yes, sir. अब देखो, now suppose if I say work done in this case, the dot product of both of them will be equal to what? Theta we consider, and torque we take it what exactly consider? We take it in terms of cos of 0 will be 1. तो टॉर्क को कैसे लिखूंगा मैं? सर कहना है टॉर्क एज पी ई. अगर मैं मैग्नेट भी लिखूंगा तो कहने से इसलिए पी ई व्हाट sin थीटा into d थीटा. दैट्स अ वर्क डन, है ना, बिकॉज टॉर्क इज पी क्रॉस ई. अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेट करो 0 to w, है ना. इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल थीटा 1 to फाइनल पोजीशन थीटा 2. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dw स्टूडेंट्स? कहने से w. हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सर, वो तो डाइपोल का कांस्टेंट रहेगा हमेशा. E क्या है? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी सर, वो तो बाहर की फील्ड है, वो भी कांस्टेंट होगी. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू d थीटा स्टूडेंट्स? Minus cos theta. वेरी गुड. माइनस cos थीटा. लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन. नेगेटिव साइन को क्या मैं बाहर निकाल सकता हूँ? व्हाई नॉट? माइनस PE. तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. यही अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो कहना है वर्क डन इज गिवन बाय द फॉर्मूला PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. इनिशियल पोजीशन इधर आया, फाइनल इधर गया. ये फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन नेगेटिव साइन को मैंने निकाल दिया तो ये नेगेटिव हो गया. और ये आंसर किसमें होगा? जूल में. दैट्स अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स. Students, is this clear? Yes, sir. Yes, Problems sir. will be asked. Yes, sir. Next lecture will be Sir, considered. what have you written in first
first line. हाँ, Can you, ये वाला sir? P is equal to Q Electric into dipole 12 moment equal to. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज Q into 12 लिखा है कूलम मीटर, इसका डायरेक्शन -q2 + q लिखा है, फिर टॉर्क को P क्रॉस E लिखा है जो P sin थीटा में आ सकता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, cos of 0 यानी इनका अगर मैं देखूंगा cos of 0 1 हो जाएगा, टॉर्क इंटीरियर, तो टॉर्क इंटीरियर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला हमें मिला ना P sin थीटा, इंटीग्रेट किया मैंने, P कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन इसका होगा cos थीटा माइनस cos थीटा। एग्रीड हर्ष? Yes, sir. Okay. Okay. Next lecture will be continuing from here onwards. Okay. Excuse me, sir. Yeah, excused. Sir, I had a doubt that